हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो डिक्टेशंस की सीरीज है वो हम कर रहे हैं। उसके अंदर आज ही हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। पुरानी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हो। उसके अलावा हम केसी लाइक डिक्टेशंस की भी सीरीज जो है वो कर रहे हैं, जिसमें मैं केसी जैसे जो मैटर्स हैं वो लिखवाता हूँ। उसके भी मैंने काफ़ी सारे मैटर्स अभी लिखवा दिए हैं और कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे, तो आप वो भी जा करके अटेंड कर सकते हो। फिलहाल आज जो है हम हमारा अपने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए स्पेसिफिकली उसी टाइप का डिक्टेशन हम लिखने वाले हैं। लेकिन डिक्टेशन लिखने से पहले एक छोटी सी चीज आपको समझने की जरूरत है, जैसे कि हम हर क्लास में स्टार्टिंग में समझते ही हैं कि जब भी आप डिक्टेशन लिखते हो, आज के टाइम पर हम सारे लोग जितने भी हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, सब लोग जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। और आज के टाइम पर एक तरह से सुपर पावर भी यही है कि जो आदमी डिस्ट्रैक्टेड कम है, वो अपना सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है उसके वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब स्टेनो के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पूरा काम है वो फोकस का ही है। अगर आप 4 मिनट, 5 मिनट, इवन 1 मिनट पे डिक्टेशन लिख रहे हो 80, 100 पे, तो उस टाइम पर अगर आप 5 सेकेंड भी इधर उधर आपका दिमाग जाता है तो आपका जो डिक्टेशन है वो खराब हो जाता है। ये सबने अभी इतने टाइम में ऑब्जर्व कर लिया होगा। और जब 10 मिनट का डिक्टेशन होता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत होती है। अब इस टाइम पीरियड पर जब आपका डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ा हुआ है, उस टाइम पे आपको फोकस रहना ज़रूरी है। और फोकस रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने एक तरह से डिस्टरबेंस के अंदर अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करनी है, स्पेशली जब आप डिक्टेशन लिखो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आप एकदम ही डिस्ट्रैक्टेड, मतलब मूवी चला करके या कोई सॉन्ग चला करके डिक्टेशन लिखो, ऐसे नहीं। पर जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि ईयरफोन से डिक्टेशंस लिखते हैं, या फिर अपना जो पेन है वो भी बंद कर देते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करके डिक्टेशन लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे अच्छा है, डिक्टेशन बहुत अच्छा लिखा जाता है। पर एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई इन्विजिलेटर आ गया, किसी बच्चे ने मान लो कुछ आवाज कर दी, और इतने सारे लोग होते हैं तो वहां पर कुछ साउंड अपने आप ही आ रही होती है, तो वहां पर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है। उसको फेस वहां पर जाकर के आप करो, उससे बेटर है घर पे ही उसका जो प्रैक्टिस है वो करके रखो। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड एरिया के अंदर, डिस्ट्रैक्टेड डिस्टरबेंस के अंदर थोड़ी अपने डिक्टेशन लिखने की हैबिट रखो, सो डेट वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी फोकस के साथ अभी हम हमारा डिक्टेशन शुरू करते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट जो डिक्टेशन सुनाई देगा वो मैंने क्लास में लिखवाया हुआ डिक्टेशन है, तो आपको मैं डायरेक्टली रिकॉर्डिंग सुनवा रहा हूँ। यूट्यूब के फीचर से आप उसकी स्पीड जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। At the hearing of the application, the parties filed a joint suit stating that evidence in the case may be received by affidavits. Accordingly, on behalf of the petitioner, an affidavit was filed by the petitioner and of two other persons. On behalf of the respondent, an affidavit was filed of himself and also of one Sheikh Qadir. Upon consideration of these affidavits and the arguments which were advanced before the learned assistant judge who heard the application, the learned assistant judge came to the conclusion that the application was maintainable and that it was necessary to appoint the petitioner as a guardian of the minors and also to direct the return of the minors to the custody of the guardian. In that view, he appointed the petitioner as the guardian of the minors and also directed their return to the petitioner. Incidentally, it may be stated that though in the written statement filed by the respondent, no contention was urged in regard to the
maintainability of the application. Considerable arguments seem to have been advanced, and they seem to have become a most debatable ground before the learned assistant judge in the application. Para. It is against this order and judgment of the assistant judge that the present first appeal is filed. Learned counsel for the appellant raised before me a large number of contentions. The first contention which urged was that the father, being the legal guardian and a person entitled also to the custody of the minors, considering the personal law which is applicable to the parties, the court was wrong in appointing the petitioner as guardian. In any event, it was his contention that before a person other than the father could be appointed as a guardian or a person in law entitled to be appointed as guardian, the court ought to record a finding that such a person was not fit to be appointed as guardian, and unless such a finding is recorded, the court does not get jurisdiction to appoint any other person as a guardian. Para. The right to be a guardian continues in favor of a person who in law is deemed to be a guardian unless removed by the court, and the court can remove a person from his legal position as a guardian only where the court is of the opinion that such a person is not fit to be appointed as guardian. He also contended that the learned assistant judge was in error in receiving the evidence by affidavit which was necessary to be recorded in the case. He contended, though the parties filed joint pursuits saying that the evidence may be received by affidavits, that would not confer jurisdiction upon the assistant judge to do so. Besides, according to him, even if the parties consented to an illegality, namely in this case by permitting evidence by affidavits, the court could not and ought not to allow this illegality to be perpetrated, since this is an appealable order by section 47 of the Guardians and Wards Act. It was his contention that evidence by affidavits could not be received. Para. The third and more substantial contention which was urged by him was that an application under section 25 of the Act for return of the minors, particularly by the wife, was not maintainable where the parties belong to the Muslim faith. He urged firstly that the father was the guardian at all times and that the father was also entitled to the custody of the minors. The custody of a wife during a certain period of years under the law was not custody as a guardian, and the father's custody may be constructive, though in certain circumstances may not be actual, as for instance where according to him the mother has gone away with the permission of the father with the children.
the constructive custody will continue. He therefore contended that mere custody of the minors may be physical custody and not constructive custody would not entitle a person to make an application for return of the minors under section 25. Stop. सो आई होप आप लोगों ने डिक्टेशन लिख लिया होगा। 90 के आसपास इसकी स्पीड थी। एग्जाम में आपके 80 WPM आएगा तो उस हिसाब से 10 WPM थोड़ा ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप 90 नहीं लिख पा रहे हो तो थोड़ा इसको कम करके लिख लो, और 90 आप लिख पा रहे हो तो इसको और इंक्रीज करने की कोशिश करो। एटलीस्ट 100 WPM तक आप अपनी स्पीड अगर बना लेते हो तो एग्जाम आपका ईजिली निकल जाता है। अभी ये जो डिक्टेशन हमने लिखा है इसका मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कि ये हमने जो है हमारी क्लास के अंदर ऑलरेडी लिख रखा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर ये हमारी स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर हम रेगुलरली क्लास करते हैं जिसमें मैं डिक्टेशन आप लोगों से रीड करवाता हूँ और फिर आप में से मोस्टली लोग सभी लोग इसको सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्राइब करते हो। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कोर्ट एग्जाम्स के अंदर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक अलग से सेक्शन बना रखा है जिसमें बहुत सारे डिक्टेशन मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप जा करके इनको लिख सकते हो और इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ट्रांसक्राइब कर सकते हो, तो ये आपको आपकी मिस्टेक्स दिखा देता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है वो समझ में आ गई होगी। आपका जो ये डिक्टेशन का PDF है वो इस साइड में आ रहा होगा, आप इसको यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आप अनसीन डिक्टेशंस नहीं लिखने लगे हो तो अनसीन डिक्टेशंस इस वाले वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।